Hello and welcome. I am Arun Kumar from Beautiful Mind IAS. Hope you are preparing your psychology optional well. And here is a model answer hint of the question, one question that has been asked in Civil Service Examination 2023. This question is slightly applied questions, means from applied angle, and several students have requested for the model answer hint. So I am going to give you the hint for this question. And here is the question. Your relative is going through chemotherapy. I think you are aware of the meaning of chemotherapy. It is a therapy given in the cancer to control the growth of cancerous cell, to destroy the cancerous cell. How your knowledge about learning theory will be helpful? 10 marks. So there are several learning theory: classical conditioning, operant conditioning, social learning. There are several learning theory. We will examine and how it will be helpful. Here, you know this thing that when person is undergoing this chemotherapy, this chemo, if we analyze the things from the classical conditioning perspective, this theory I am using, I think you must be aware that this chemotherapy creates nausea feeling, vomiting, and pain, fear. So many emotional reactions and autonomic reactions are associated with it. It is painful thing. But most disturbing thing is that taste aversion. Whatever things a patient who is undergoing chemotherapy has eaten just before the therapy, he would develop the aversion for the food also. Suppose he has eaten rice, then after therapy he would be reluctant to. Moment he would see the rice, will feel vomiting kind of thing. Bread, vegetables जो सब्जी खाते हैं, pulses दाल जो खाते हैं, आइसक्रीम, मिल्क, कर्ड, whatever. So यानी कि ये जो आप जस्ट आपने कुछ खाया है, जैसे आपने फूड वगैरह, एंड उसके जो फ्लेवर है, ये इससे they develop aversion. So what happens during this is technically you can say this is unconditioned stimulus, and this is unconditioned response. You know this thing, classical conditioning, unconditioned stimulus, and because this is paired with this one, because this is paired with this food. So after when therapy, this chemotherapy, because this has been paired, this just before this came, so this nausea feeling and all, whatever food person has consumed, nausea and other feelings, that's so this food will become what? CS, and this become CR. And during the therapy, this association develops. You know this thing? This is the acquisition phase. So now, after when this therapy is over and patient goes home, then whatever food you would offer, nausea feeling will come. Means this food I am talking about. This thing. This is a very disturbing thing. So regular food can't consume. So here we can use the knowledge of learning. And it is now in practice also. Suppose
we give rice, roti, vegetables, whatever. Can be, or something, some ice cream, vanilla and something. It is bound to, be associated with this one. So can't we give food, unusual food, flavor, ऐसे फ्लेवर की चीज़ें दे जो अनयूजुअल सा है. सो कंडीशनिंग विल टेक प्लेस ऑफ दिस फ्लेवर. क्योंकि रेगुलर तो है नहीं, मैंने क्रिएट किया है कॉकटेल टाइप का एंड आई हैव गिवन. सो आफ्टर थेरेपी person would develop aversion for this kind of flavor, unusual kind of thing that is not given regularly in food. So what would happen? My learning theory, see this will help कि अब उसे रेगुलर खाना खाने में दिक्कत नहीं होगी, because he would not develop aversion for normal food that we generally consume. हम क्या खाते हैं? जो रेगुलरली राइस है, ब्रेड है, वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, दिस जो भी चीज़ें हम रेगुलर खाते हैं, चिकन मटन जो भी आपको, उसके एवर्जन नहीं होगा. तो दिस इज वेरी हेल्पफुल. अंडरस्टूड? सो ये जो हम ये चीज़ें, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, ऐसा देखा गया है दैट कैन बी, जब अगली बार कीमोथेरेपी के लिए लाया जाता है तो सेम हॉस्पिटल से डर लगता है, नॉसिया फीलिंग होता है. सो कैन वी कैन यूज डिफरेंट हॉस्पिटल ऑल्सो, डिफरेंट स्टाफ वार्ड्स. अगर हॉस्पिटल नहीं चेंज कर सकते तो वार्ड्स तो चेंज कर ही सकते ना, कि जैसे अब बिल्डिंग से ही एवर्जन हो रहा है उस कॉन्टेक्स्ट से. सो वी कैन चेंज द स्टाफ ऑल्सो. फर्स्ट सपोज राउंड दिस पर्सन हैव गिवन कीमोथेरेपी टू दिस पर्सन, तो इन द नेक्स्ट राउंड सेकंड कीमोथेरेपी स्टाफ शुड बी डिफरेंट, because these connections between CS and US develop automatically. So these are the things that could be used to help the patient to get rid of these kind of unwanted reactions. When chemotherapy is over, then वो चीज़ों से डर लगते हैं उसको, अगली बार जब आते हैं तो उन चीज़ों से भी ख़राब लगने लगता है, स्टाफ से भी दिक्कत है, खाने से दिक्कत है, इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, if we look at the operant conditioning principle, also called instrumental learning, I don't think that it will be applicable here also, because प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा ये है. एंड सोशल लर्निंग में अगर हम कुछ देख सकते हैं तो देख सकते हैं कि दैट सम इंडिविजुअल हैव टेकन अंडरगोन कीमोथेरेपी, नाउ दे आर डूइंग वेल. उनके पहले जो है कीमोथेरेपी के दौरान आपका क्या होता है कि सारे हेयर्स जो हैं फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं. देन उनको दिखाया जा सकता है कि देखिए नाउ दे आर नॉर्मल. सो ये ट्रांजिटरी है. सो दिस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग विल ऑल्सो बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन. यही कर सकते हैं. तो ये थोड़ा ये बड़ा रोल होगा जो मेजर क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स, एंड दूसरा जो हमने देखा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का, जिसको सोशल लर्निंग कर रहे हैं हम, बंदरा थ्योरी आपने देखा. इन दोनों को यूज़ करके हम बता सकते हैं कि हम ऐसे हेल्प कर सकते हैं. आई थिंक दिस वुड सफाइस द आंसर. कंटेंट इतना सफिशिएंट होगा आपके लिए आंसर करना. आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर. डिफरेंट पीपल विल अप्रोच इन डिफरेंट वे, बट दिस विल बी द मेजर फोकस ऑफ द आंसर, जहाँ पे आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर सकते. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. In the next video, I will try to discuss another model answer of this question that is slightly tricky or difficult. And if you want that I should answer more particular questions, then let me know the number of the question in the comment box. And if you have any other queries also, you can ask me. Okay, so you know this thing that we at Beautiful Mind IAS try to focus on the understanding of the subject and try to teach you the way you learn and you should apply in the real life situation when it is asked to what will do. So most of the students who have given this year examinations, our students, they did well. So कुछ लोग जैसे हैं जिनको थोड़ी दिक्कत हुई, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 का. अगर आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है तो कमेंट में आप लिखिए.
I will definitely try to take that question. Thank you very much.